Hi, everybody, welcome back to another lesson of Introduction to JavaScript. और इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड लूप्स ऑल्दो जब हम लूप्स की बात करते हैं तो लूप्स आर मेंट फॉर एरेज चूँकि एरेज होती हैं दे लाइक अ ब्लॉक ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स उनको आइट्रेट करना होता है उस मकसद के लिए यूज़ होते हैं लेकिन विल गेट इन टू एरेज इन like 1 or 2 lectures afterwards. So let's just see and also see the types of loops as well. ये भी important है. Not for the people जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं होगी लेकिन फॉर पीपल हु आर बिगिनर्स उनके लिए ये लेसन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है. So to build loops, as you can see, we have three kinds of loops: for loop, do while, and while loop. तो हम तीनों को एक एक करके देखते हैं कि हाउ दे बिल्ट इनटू जावास्क्रिप्ट और आप किस तरह बना सकते हैं, हाउ यू कैन डू स्टफ विद इट. सो या सो फॉर लूप के अंदर हमारे पास पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन का, विच इज़ समथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू. जस्ट प्लेन ओल्ड डिक्लेरेशन. दूसरा पार्ट होता है लिमिट चेकिंग का, या आप कह सकते हैं लूप चेक इसको, जो सिर्फ ये देखता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इसकी वैल्यू स्टैंड ट्रू करती है या फॉल्स करती है, उसकी बेसिस पे जो ब्लॉक होता है लूप का वो एग्जीक्यूट करता है. और जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज़ केप्ट फॉर ईदर इफ़ यू वांट टू इंक्रीमेंट द लूप और इफ़ यू वांट टू डिक्रीमेंट द लूप. So down here, you have a console statement. It just prints the index of the loop. So if I just go on and run this script, we'll get something like this. So since the index goes from 0 to I lesser than 4, so we get 0, 1, 2, and 3. So let's quickly just comment this out so that we can uncomment the while loop. Do while loop. Now, do while loop is something that exists in across the programming languages. लेकिन आई हैव नेवर यूज्ड इट. मैंने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया. इवन मैंने while loop कभी इस्तेमाल नहीं किया. सो अगर अरेज के साथ काम करते हैं तो अरेज का अपना एक लूपिंग मेथड होता है, वो भी हम देखेंगे. और मोस्टली अगर ज़रूरत पड़े तो मैं फॉर लूप पे ही गुजारा कर लेता हूँ, क्योंकि I don't know, मेरे ख्याल से relevance from the old programming days when I was learning programming. Maybe that's why. So anyway, for the do while loop, all you need is a variable, any variable, and you need a do block, जिसके अंदर वो statements होती हैं जो आपने execute करनी है. And the while part just actually keeps a check of the limit. For example, j variable है यहाँ पे, तो डू के ब्लॉक के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है और वाइल के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जे की 4 तक वैल्यू चेक हो रही है. अब इसमें होगा सिर्फ ये कि डू हमेशा रन करेगा ही करेगा. ईदर फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट फॉल्स हो तब भी करेगा ही करेगा. तो इफ़ वी जस्ट play the value, so we get hello world 1, 2, 3, and 4 times. So that's how do while loop works. Let's just comment this out and let's go to while loop. Let's uncomment this. A while loop is much more simplistic. It just checks the condition और उसके बाद body में वो आके statements को execute कर देता है. दोनों केसेस में डू वाइल में आपको खुद ही से वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एज यू कुड सी. अब मोस्ट ऑफ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डू वाइल, वाइल लूप. तो डिफरेंस यही है जो कि मैंने अभी पहले भी बताया कि वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट पहले चेक होती है, उसके बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. लेकिन डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट चलती है और जो उसका चेक है वेरिएबल का, लिमिट चेक या लूप चेक, वो बाद में रन होता है. तो दैट्स हाउ while loop works. So okay, so we had hello world and
lowercase above, or niche we have h in caps. So this is the output of while loop, and these are how you can build loops in JavaScript. Mostly, it's up to your choice. आपको जो अच्छा लगे, you can adopt that. So yeah, that's pretty much it. I'll see you in the next video. Thank you.